Yes, now we are going to teach next type of numerical of thermodynamics. In this next type, the formula which is delta H is equal to delta U plus delta NGRT. It is our new formula. Do you know what is delta H? Delta H means enthalpy change. You know that with respect to reaction, how much amount of heat is evolved, how much amount of heat energy get evolved or absorbed. It is indicated at the end part of the chemical reaction. This value is delta H. Suppose, example, carbon solid plus O2 gas, which gives CO2 gas, comma, delta H is equal to minus 394 kilojoule. It means such type of reaction is thermochemistry reaction, thermochemical reaction. In this thermochemical reaction, we can conclude that this is heat of reaction. This is heat of reaction, and we are considering always the process which is at constant pressure. So heat of reaction at constant pressure is delta H. Heat of reaction at constant pressure delta H, it is also represented as QP, amount of heat evolved or absorbed by chemical reaction at constant pressure. Heat of reaction at constant pressure. Heat of reaction. Change in enthalpy. Change in enthalpy. Change in enthalpy. Heat of reaction. Change in enthalpy. Delta H is equal to QP. What is delta U? Delta U is the same part which is QV if the chemical reaction takes place as constant volume. Isochoric process. अगर chemical reaction isochoric process से हो रही है constant volume, then it is QV. Or it is also known as heat of reaction at constant volume. Heat of reaction at constant volume. Heat of reaction at constant volume, or change in the enthalpy at constant volume. Change in internal energy. Change in internal energy. We use this formula for gaseous chemical reaction or gaseous compound. They react, gives a product. Delta Ng means, you know that number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. Product gaseous part with respect to stoichiometry, put this value of number of mole, and another reactant side, put this value towards reactant, product minus reactant. When delta H is equal to delta E plus delta NGRT, R which is constant, the value of R which is given to you. These are the two examples. These are the two examples. Progress is going on. So many different types of examples are coming. How it is to be solved, मैं आपको बता सकता हूँ. उसका explanation भी आपके सामने है. वो formula भी आपके पास है. With respect to that formula, we can solve such type of two problems. The first problem, this is the explanation, example, it is the formula. With respect to this formula, I am not doing any type of calculation. I am giving an idea about to solve the problem. Observe this and solve. Okay. It is our formula. Delta H for the following reaction. Reaction is given to you. 2C solid plus 3H2 gas
2C solid plus 3H2 gas, which gives C2H6 gas, and its delta H is given to you, that is minus 84.4 kilojoule. Minus 84.4 kilojoule. It is one of the reaction. Its delta H is this. Delta H for the following reaction is minus 84.4 kilojoule at 25 degrees centigrade. It means temperature is also given 25 plus 273 केल्विन में आपको कन्वर्ट करना है उसको 298 केल्विन. बार बार 300 या 298 आपके सामने आएगा. कैलकुलेट डेल्टा यू. डेल्टा यू निकालना है. R is equal to this. Your formula is this. You must write what is delta N. With respect to the reaction, observing the reaction, you must calculate delta N. An important part. Delta N is equal to number of moles of gases product. Number of moles of gases product 1 minus number of moles of gases reactant. Summation of number of moles of gases product minus summation of number of moles of gases reactant. Summation of number of moles of gases product minus reactant. This solid आपको लेना नहीं है. Don't take this solid. एग्जाम में बिल्कुल वो आप लेंगे और वो लिखेंगे और बाहर आएंगे, बस मेरा ये प्रॉब्लम आ गया. This is solid part. Solid part not to be calculated to determine delta N. 1 minus 3 is equal to minus 2 mole. Minus 2 mole is delta N. Delta N minus 2 mole. पूरे वैल्यूज आपके पास है, फॉर्मूला भी है. निकालना क्या है आपको? डेल्टा यू. फॉर्मूला मॉडिफाई करेंगे बच्चों. मॉडिफाई डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन GRT. ओके, फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया. डेल्टा एच इट इज इन किलो जूल. कोई प्रॉब्लम? और एक बार यूनिट बाय यूनिट पढ़ते रहो, यूनिट के गीत गाते रहो. यूनिट के सिवा कोई नहीं है मेरा, सिर्फ यूनिट है हमारा. यूनिट के पास से गुजरते गुजरते देखना है कि डेल्टा एच किलो जूल में है और आर जूल में है. तो आपको एक तो इसको किलो जूल में करो या डेल्टा एच को जूल में करो. इसको किलो जूल में भी कर सकते हो, उसको जूल में भी कर सकते हो. ठीक है, उसी को अपन जूल में करेंगे. ओके बेटा, ये जूल में ऐसे ही रहेगा. डेल्टा एच जूल में क्या होगा फिर? माइनस 84.4 84.4 इंटू 10⁻³ 84.4 इंटू 10⁻³. ये आगे चले गए 1 2 यस 84400 84400. ये जूल हो गया. 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आगे 3 जीरो आए थे, फिर एक पॉइंट आ गया तो एक जीरो निकल गया. सिंपल बात है. डेल्टा एन माइनस ये माइनस साइन आंसर का, ये फॉर्मूला का माइनस है. सोचना है अपने को, फॉर्मूला का माइनस है. अपना माइनस तो शान के साथ लिखना है अंदर. ये भी लिखना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. टेम्परेचर 298. Do the calculation. माइनस 84400 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 से 298 8.3 को मैंने मल्टीप्लाई किया. 2 से 298 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 596 इंटू 8.314. ये मल्टीप्लिकेशन हो गया. माइनस माइनस का प्लस हुआ. ये तो माइनस होगा 84400 प्लस 4956. इसके बाद आंसर आएगा
minus 79,444 joule. Minus 79.44 joule. It is the answer. ये प्रॉब्लम है. डेल्टा H for the following reaction. At 25 degrees centigrade, calculate delta U for the reaction. It is my first problem. Second problem के लिए आपके लिए लिखा हूँ मैं यहाँ पे. लिख लो. नहीं है तो अगली वीडियो में तो आएगा. अगली वीडियो में आप लिखोगे. Calculate the work done in oxidation of 4 moles of SO2. SO2 का ऑक्सीडेशन है O2 के साथ. 4 moles दिया है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. Right? Delta N determination is important part. Delta H, heat of reaction at constant pressure, enthalpy change. Delta U, heat of reaction at constant volume or in internal energy change. Delta H या डेल्टा U, एक वैल्यू आपके पास होगा. दोनों में से एक निकालना होगा. R, it is a constant. T, it is a given. Delta N, number of moles of gases product minus number of moles of gases reactant. इसके हिसाब से आपको डेल्टा एन निकालना है, वैल्यू पुटअप करना है. थर्मोडायनामिक्स नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्मूला इज दिस. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा एच गिवन रिएक्शन. If it is given, don't write the reaction. If it is not given, write the reaction with respect to their physical state. Physical state के साथ उसको reaction लिखना है. लिखने के बाद number of moles of gases product, number of moles of gases reactant. Solids and liquid part which is not to be taken in the calculation of delta N. And if delta N becomes 0, then delta U is equal to delta H. There is a condition that question आया था एक बार. Change in the internal energy and change in the enthalpy both are equivalent. What is the condition? The condition is the reaction between solid and liquid or change in the moles with respect to stoichiometry. Delta N becomes 0, then delta U is equal to delta H. Thank you.